Hello children, now I will teach you capital cursive B and small cursive B. Before we start writing our letter, I will explain you English lines. 1 number top line, 2 number middle line, 3 number bottom line, 4 number last line. For writing alphabet B, you put your pencil on top line. Put your pencil on top line. Now we will start writing our letter. First you make slanting line. Go down, down, down. Touch bottom line. That is line number 3. Now turn back and again go up, 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 up. Touch the top line. Now make one D curve which will touch middle line. Now make one more D curve. Now go in. This is capital B. Okay, B says B. Now again I'll tell you. First touch the top line. Make one slanting line, touch the bottom line. Now turn, go up, 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 touch the top line. Now from top we will make one D curve which will touch middle line. One more D curve we will draw which will turn bottom line. Now turn in. This is capital B. B says B. Now we will write small b. Make one long loop stroke like this. मैंने आपको पहले भी सिखाया था. Make slanting line, go back and pull it down. तो इससे आपका लूप बन जाएगा, लॉन्ग लूप स्ट्रोक बन जाएगा. सेम वे इससे हम बी भी बना सकते हैं. मेक वन लॉन्ग लूप स्ट्रोक, गो बैक, पुल इट डाउन एंड पुल इट अप. इसको ऊपर खींचो एंड टच मिडिल लाइन, गो इन एंड आउट. गिव इट अ स्मॉल टेल. दिस इज स्मॉल बी. B says B. तो अब जब भी आपको B साउंड आएगी तो आप कौन सा अल्फाबेट लिखेंगे? B. B says B. एंड B साउंड आपको कब आती है? जब आप लोग के सामने होता है B बनाना, B बेल, B बोट, B बेबी, B बुक, B बर्ड, B ब्रिंजल. इन सब का फर्स्ट बिगिनिंग साउंड इज B. B says B. Okay?